Good morning, students. We were discussing about nutrition in plants. So in our first class we have discussed about what do you mean by nutrition. Nutrition is a mode of taking food and its utilization by the body is known as nutrition. Thereafter we come to know about the nutrients. Nutrients are carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals for both animals and plants, but most probably plants uses the carbohydrates in the body and most of it stores. So how plants prepare carbohydrates? By taking minerals. So minerals are the nutrients. Minerals waters carbon dioxide and prepare their food. So minerals dissolve in water that the plant gets from the soil through its root is known as their nutrients. Then plant prepares carbohydrate, protein, fat, all kind of food and utilize in its body somehow, and the excess carbohydrate is stored in the form of starch. इतना हम सब डिस्कस कर चुके थे. Thereafter हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन टू टाइप्स: ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड and utilize it in their body is known as autotrophic nutrition. And heterotrophic nutrition, the nutrition in which organisms cannot prepare their own food, they depend on others for their food and utilize the food in the body is known as heterotrophic nutrition. So autotrophic nutrition, who does the autotrophic nutrition? They are known as autotrophs. जो लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, और जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं वो लोग उन लोगों को हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है. हेटरोट्रॉफ्स कैन बी हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स. एग्जाम्पल रे तुम देइपारिबो हेटरोट्रॉफ्स रे के जेकोसी हर्बिवोर, जेकोसी कार्निवोर, जेकोसी ओमनिवोर एमनकर एग्जाम्पल देइपारिबो. किंतु ऑटोट्रॉफ्स रे तुम एग्जाम्पल दब केवल प्लांट्स, आल्जी आउ यूग्लिना. यूग्लिना गोटे एनिमल किंतु सी फोटोसिंथेसिस करि पारे. सो दैट इज ऑटोट्रॉफिक. सो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव देयर chlorophyll, green color pigment or chlorophyll in their body, they are regarded as autotrophs. So it is necessary to be do the autotrophic nutrition. Organism must have chlorophyll in them. Okay. Thereafter heterotrophic nutrition रे different categories अच्छी. गोटे saprotrophic nutrition अच्छी, गोटे parasitic nutrition अच्छी, गोटे symbiotic nutrition अच्छी. माने saprotrophs माने भी heterotrophs परिका. हेटरोट्रॉफ्स जमती अन्य ऊपर डिपेंड करे, साप्रोट्रॉफ्स भी डिपेंड करे, कि को कहा ऊपर डिपेंड करे? से माने डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर ऊपर डिपेंड करती. तापर आसला पारासाइट्स. पारासाइट्स माने कहा ऊपर डिपेंड करती? पारासाइट्स माने अदर एनिमल मान भितर रहती, जमीक वायरस, बैक्टेरिया, अदर एनिमल मान भितर रहती आउ से न्यूट्रिएंट्स नियंती. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ पारासाइट्स, यू मस्ट मेंशन दैट the parasites are the organisms, or parasitic nutrition is the nutrition in which the parasite resides in the body of the host, take their nutrients and causes disease in the host body. It's a mandatory line. Nihati lekhibo, it causes harm to the host or it causes disease in the host. That's why it is known as the parasites. And what is symbiotic nutrition or symbiosis? In symbiosis relationship, there is a guest that resides in the host body, but it don't harm to the host. Okay. बैक्टेरिया वायरस जेमिति पैरासाइट हेबा जोगु से माने हार्म पहुँचाउछंती, किंतु एमाने काहाकू हार्म पहुँचांतीनी. हैला जेमिति कि तुम डाली जातीय उद्भिदर रूट रे गोटे बैक्टेरिया रहे, ता ना होछि राइजोबियम. से कौन करे? वायुमंडल रु नाइट्रोजन माने कंज्यूम करके एब्जॉर्ब करके सॉइल रे मिसाए, जहाँ फल कि लेग्युमिनस प्लांट बा डाली जातीय उद्भिद माटीरू नाइट्रोजन पाइपारे आउ सेथिपाई पुष्टिसार बनै पारे, हैला प्रोटीन प्रोड्यूस करि पारे. सो इट्स नेसेसरी फॉर द
this kind of relationship is known as the symbiotic relationship, where both are get benefited. Plant is getting nitrogen, and the rhizobium, which is residing inside the root nodules of the leguminous plant, it get its residence or gets a shelter. Okay, so a प्रकार relationship heterotrophic relationship, but relationship को symbiosis कहा जाए. तो basic difference between the parasitic and symbiotic relationship is parasitic रे parasite harms to the host but get benefits, and one get benefited, parasite get benefit, and other is got harmed. Okay, but in symbiosis both are get benefited. Okay, otherwise one get benefit, other neutral, harm kehi kahaku karanti nahi. That is the basic difference between symbiosis and parasitism. So these are all comes under the heterotrophic nutrition. So the word heterotrophic is a combination of two words, hetero plus trops. Trops means nutrition, hetero means other upare जो मैंने depend करती for their nutrition or nourishment, they are known as heterotrophs. Okay, animals cannot make their food themselves, they depend for food upon the plants or other animals. So they are all animals are heterotrophs except euglena. So thereafter, saprotrophic nutrition. I have already told you the nutrient taking of nutrients by organism from the dead and decaying ମାନେ ପଚା ସଢ଼ା ମୃତ ଜୀବ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରୁ ବା ଆନିମାଲ୍ ହେଇପାରୁ, ତା ପାଖରୁ ଯିଏ ନେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ତାକୁ ସାପ୍ରୋଟ୍ରପ୍ କୁହାଯାଏ in the form of solution. Okay, the taking of nutrients by organism from dead and decay matter in the form of solution is called saprotrophic nutrition. The organism which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Example, fungi. Fungi means all kind of mushrooms. तापर देख एति क्वेश्चन अच्छी ऑटोट्रॉप्स क्या कहती, ऑटोट्रॉफिक मोड कौन, ए क्वेश्चंस गुड़ा सब प्रिपेयर कर मु टेस्ट करेबी. Thereafter photosynthesis. Class 6 रे भी आम पढ़ी photosynthesis. The food making process in plant is known as photosynthesis. ए डायग्राम का करिवो, इक्वेशन लिखिवो. मु ऑलरेडी इक्वेशन विषय डिस्कस करछि. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर. सो लाइट रो प्रेजेंस रे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिसई कि प्लांट जो प्रकार खाद्य तैयारी करे से जदि नाइट्रोजन मिसिला, केवल डाली जातीय उद्भिद ही नाइट्रोजन मिसई पारिबो तो से प्रोटीन दबो. अदरवाइज एवरीवन विल प्रोड्यूस व्हाट, कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट सबू प्लांट्स प्रिपेयर करती. मुझे ऑलरेडी कही सो सबू खाद्य किसी कार्बोहाइड्रेट, किसी प्रोटीन, किसी फैट रही थाए. सो एमती ना कि प्लांट केवल गोटे काइंड फूड तैयारी करुच्ची. ओके, सो जोहार परिमाण अधिका था से प्रकार खाद्य कही था. तो यू हैव टू रिमेंबर कार्बन डाइऑक्साइड रो सिंबल होची सी, कैपिटल ओ. हाइड्रोजन ता तले 2 लिखिबो. वाटर सिंबल होची कैपिटल ओ, एच तले 2 लिखिबो. सेमती CHO होची एटा कार्बोहाइड्रेट बा सिंपल सुगर बा ग्लूकोज रो फॉर्मूला, तापरे O2 है. सो दिस इज द वे टू राइट ड्रॉ दिस डायग्राम्स. ऑलरेडी आम पढ़ीचे. So what are the necessary factors for photosynthesis? So for photosynthesis there must be sunlight, there must be chlorophyll, there presence of water and minerals, presence of carbon dioxide. ये चार्टा जिनस नहेले photosynthesis हो पारिबो नाही. तो मो बुक रे गोटे एग्जांपल दिया हिची, माने एक्टिविटी दिया हिची केमिति गोटे पत्र को माने प्लांट को नहीं कि ताकू खरा रे रखिबो, पुणी आनी छाई रे रखिबो, तापरे पत्र नबो, ताकू बुड़ेब अल्कोहल रे, तापर देखिबो कोन तार होची चेंजेस होची. तो गो थ्रू दैट एंड नेक्स्ट क्लास रे मु तुमको पचारिबी. सो देयर आफ्टर द FAQs एगुड़ा क्वेश्चन देखाई. सो गो थ्रू द क्वेश्चंस और भल कि प्रिपेयर कर. स्टोमाटा एका विषय नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करवा.